On this pleasant February morning in Nagpur, I wish a very warm good morning to one and all. Though the air may be cool outside, but the enthusiasm in this auditorium is keeping us truly warm. It is indeed an honor to acknowledge the presence of some of the most brilliant and ingenious minds who have converged here in the Orange city of Nagpur, also called the Tiger Capital of India, from every nook and corner of our country. I believe, and you all will agree, every healthy dog is a testament to a veterinarian's skill, and every vigilant canine veterinarian is a silent protector of public health. Myself, Dr. Shaini Jogi, on behalf of Indian Society for Advancement of Canine Practice, ISACP, welcome you all to the inaugural function of its 12th Annual Convention and National Symposium on the theme, Role of Canine in One Health, Building Partnership and Resolving Challenges, organized by Department of Veterinary Surgery and Radiology, Nagpur Veterinary College, Nagpur, in collaboration with National Association for Welfare of Animals and Research, NAVAR, and Maharashtra Animal and Fishery Sciences University, MAFSU, Nagpur. Soha
As we remain standing, the MAFSU University song will be played. We have a short clipping on the activities of Department of Veterinary Surgery and Radiology at NVC Nagpur. The dignitaries on the dais can stand at 45-degree angle to view the LED wall as well as the audience for convenience. Kindly be seated. Where knowledge is kindled, ignorance fades, and purpose begins to shine. Tamasoma Jyotirgamaya. I request the dignitaries on the dais to light the traditional lamp as the Saraswati Vandana is rendered, marking the auspicious commencement of this program.
It is truly heartening to witness the scientific fraternity from across the country assembled here today, bringing together experience, expertise, and a shared vision. To inaugurate the 12th Annual Convention of Indian Society for Advancement of Canine Practice, ISACP, and National Symposium, we have amongst us some illustrious notable guests. Honorable Dr. Mohan Bhagwat ji, Sar Sanchalak, Rashtriya Swayamsevak Sangh Nagpur, is the chief guest of today's function. On behalf of the organizers, I request Dr. Nitin Padal sir, Honorable Vice Chancellor, Maharashtra Animal and Fishery Sciences University, Nagpur, to offer shawl, shriphal, memento, and a floral welcome as a token of love. Dr. Mohan Bhagwat is the 6th Sar Sanchalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh Nagpur. Born in Chandrapur, Maharashtra, he comes from a family of RSS activists. He is alumni of Nagpur Veterinary College, having completed his BVSc and AH from here. During his post-graduation from Akola, he became a full-time pracharak of RSS by 1975. He served in various posts in RSS and finally chosen as Sar Sanchalak in 2009. He was awarded honorary doctorate in 2017 by MAFSU Nagpur. He is still going strong as chief of RSS, which is the progenitor and leader of large body of organization called the Sangh Parivar, which has presence in all facets of Indian society. Next, we have 3 guests of honor in our midst. We are honored to have with us Dr. Parinay Phuke, MLC and Executive Council Member of MAFSU Nagpur. I request Dr. Nitin Padal sir, Honorable VC MAFSU Nagpur, to offer shawl, shriphal, memento and a bouquet as a token of love from the organizers. A young, dynamic, dashing politician affiliated to Bharatiya Janata Party, Dr. Parinay Phuke is a PhD from Nagpur University and MBA from Sikkim Manipal University. He is serving as a member of Legislative Council for the Bhandara Gondia constituency and actively involved in state cabinet decision under Devendra Fadnavis government in Maharashtra. He also had been the former Minister of State for Public Works and Tribal Development and Forests. Welcome to NVC, sir. We are delighted to have amongst us President of Veterinary Council of India, New Delhi, Dr. U.C. Sharma, who is the guest of honor of today's function. I again request Honorable V.C. sir to welcome Dr. Sharma sir with shawl, shriphal, memento and a bouquet of flowers. Dr. Umesh Chandra Sharma hails from Bhopal, Madhya Pradesh, who received his veterinary science degree from Mau Veterinary College in 1997. He rose from being the veterinary officer to being elected President of Veterinary Council of India and also Indian Veterinary Association. He served as a member of ICR, member of Nanaji Deshmukh Veterinary Science University, Jabalpur, as a selection committee member of VC of Veterinary University of Kerala and Rajasthan, and also as President of the Provincial Gazetted Veterinary Association, Madhya Pradesh. Apart from this, Dr. Sharma is voluntarily associated with many social organizations of the country. Welcome to Nagpur, sir. We heartily appreciate the presence of Honorable Dr. Ramaswamy N., Secretary, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Maharashtra, who is a guest of honor for this function. I request Dr. Patel, sir, Honorable VC MAFSU Nagpur, to offer him a bouquet, memento, shawl, shriphal as a token of love and appreciation on behalf of the organizers. Dr. Ramaswamy is a veterinarian who graduated from Madras Veterinary College. He completed his post-graduation in animal nutrition from ICR IVRI Izzatnagar. He cleared the civil service examination to become IAS officer. Currently, he heads the Administrative Division of Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Maharashtra. And one important thing, he has been generously helping the university for creating infrastructure. It's a pleasure to have you here, sir. To felicitate our very own Honorable Dr. N.V. Patil, Vice Chancellor, Maharashtra Animal and Fishery Science University, Nagpur, and Chief Patron of the organizing committee, who is also the chairman of the inaugural function, I request Dr. S.V. Upadhyay, sir, Organizing Secretary, DI Dean, Veterinary Science, MAFSU Nagpur, to offer a bouquet, shawl, shriphal, and a memento to Honorable V.C. sir.
Dr. Nitin V. Patil, a leader par excellence, has vast and varied experience from being livestock development officer to academician to scientist to heading several ICR institutes such as Central Institute for Research in Buffalo's Nabha, Punjab, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, National Research Center for Camel, Bikaner, Central Institute for Research on Cattle, Meerut, before resuming charge of Vice Chancellor at MAFSU. He has implemented more than 36 R&D projects worth rupees 13.51 crores, funded by various national and international agencies. He has many patents for PhD research scholars, several research papers, books, 110 TV and radio programs, 18 gene sequences to his credit. He has signed many MOUs with many institutes and international institutes. Welcome, sir, to the program. We have with us President of the Indian Society of Advancement of Canine Practice, ISCCP, Dr. S. Prataban. I request Dr. S. Upadhyay, sir, Organizing Secretary, DIN Dean, MAFSU Nagpur, to welcome Prataban, sir, with shawl for memento and a bouquet of flowers as a token of love. Dr. Prataban Setu Pandian is a professor and head of Department of Veterinary Clinical Medicine at Madras Veterinary College. He had been the former director of clinics and dean at Tamil Nadu Veterinary and Animal Science University, Tanuvas, Chennai. He has numerous publications to his credit and has been felicitated with many awards. Presently, he is serving as the president of ISCCP. Welcome to Nagpur, sir. We are glad to have with us Shri Sudhir Diveji, Executive Council Member, MAFSU Nagpur. I request Dr. S. V. Upadhyay, sir, Organizing Secretary, DI Dean, Veterinary Science, MAFSU Nagpur, to offer short shri for memento and a bouquet to Divej, sir. Shri Sudhir Diveji is always helpful for the welfare activities of the university, and his constant persuasion at government level for the university proposals is highly appreciated both at the college and the university level. Welcome to the convention, sir. The 12th annual convention of ISCCP and National Symposium is being made possible by the untiring efforts of Dr. S. V. Upadhyay, sir, Organizing Secretary and Director of Instructions and Dean, Faculty of Veterinary Science, MAFSU Nagpur. I invite Dr. J.P. Kode, sir, Associate Dean, NVC Nagpur, to offer shawl, shri for memento and a bouquet of flowers to Dr. Upadhyay, sir. Dr. Shirish Upadhyay, well-known veterinary surgeon in Nagpur, started his career as LDO with Maharashtra government, subsequently joined college as assistant professor and handled the various posts as officer in charge, Maharaj Bagh Zoo, technical officer, resident surgeon, deputy director of research, controller of examination. He has handled several research projects, a number of research papers to his credit. He is currently working as director of Wildlife Research and Training Center, Guruvara, Nagpur, apart from being the director of instructions and dean, Faculty of Veterinary Science, MAFSU Nagpur. Our very own Dr. J.P. Kode, sir, Associate Dean, Nagpur Veterinary College, who is also the chairman of the organizing committee, is with us. I request Dr. S.B. Akhre, sir, professor and head of the Department of Veterinary Surgery and Radiology, to welcome him with a shawl, shifted memento and a bouquet. Dr. Jayant P. Kode is a renowned animal physiologist and is heading the Department of Animal Physiology in the college. He has been the nodal officer for ICR and organized several events for the college as well as the university. Welcome to the program, sir. I now invite Honorable Dr. N.V. Patil, Vice Chancellor, Maharashtra Animal and Fishery Sciences University, Nagpur, to deliver the welcome address. Sir, please. Namaskar. Honorable Dr. Mohan Bhagwat ji, Sir Sangchalak, Rashtriya Swayamsevak Sangh and chief guest of today's function, Honorable Pranay Phuke ji, MLC and Honorable Executive Committee member of this university, Honorable Dr. Umesh Chand Sharma ji, President
Veterinary Council of India, New Delhi, Honorable Dr. Ramaswamy, Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairy Development, Fisheries, Government of Maharashtra, Shri Sudhir Diveji, Honorable EC Member for this University, Dr. Shirish Upadhyay, Director, Instructions and Dean Veterinary Sciences, and Organizing Secretary for this convention, Dr. Nitin Kurkure, Director Research, Dr. Sachin Bonde, Director Extension and Dean Faculty of Fishery Sciences, Dr. Ram Teke, Dean Lower Education, Dr. Jayant Korde, Associate Dean of Nagpur Veterinary College and Chairman of this particular function, Organizing Committee function, distinguished faculty member, eminent scientists, academicians, private practitioners, field vets, industry personnel, the media persons, dear students, ladies and gentlemen. Today, I stand before this august gathering with an immense pride and deep honor because it is a great, very auspicious and significant moment for us that Dr. Mohan Bhagwatji, a distinguished alumnus of this Nagpur Veterinary College, Nagpur, who continues to be the inspiration for our entire fraternity, he is here, and university, as was told, was privileged to confer upon him the honorary doctorate in recognition of his remarkable contributions. It is for the veterinary sciences as well as for the Indian society in terms of India's social, cultural, educational, tribal development field. As chief of that particular organization which gives the value for the personality individually, it transfers to the social circle, it transfers to the nation, and now it has now transcended into the worldwide. So the RSS chief is here as a chief guest of today's function. So I, on my behalf and on behalf of this university, sir, I welcome you here, and I continue to have your presence and guidance forever for the development of this particular institute and also the university. I am also delighted to extend the warm welcome to Shri Dr. Parinay Phukeji, who is MLC and who has recently been nominated as a honorable member of EC, Executive Council of this university. I also extend my warm welcome to Dr. Umesh Chandra Sharma, who has all the way come from New Delhi and representing Veterinary Council of India. I am also happy to receive Dr. N. Ramaswamy, the Secretary Animal Husbandry, Dairy, Fisheries, Government of Maharashtra. I also welcome Sri Sudhir Diveji, Honorable EC Member. All these persons, those leaders in their respective fields, have consistently supported and guided our university in its journey of progress and development. In particular, I want to state that the remarkable encouragement and unwavering support that is given by all those sitting on the dais and some people there in the dais, that has helped in achieving many of those achievements, actually resulting in the increase in the number of the colleges that we have today. We very modestly started 25 years back when we had 5 veterinary college, 1 PG college, 1 dairy technology college. And thereafter now, we have 6 veterinary colleges which are working. 3 have already been again sanctioned, and next year possibly we are getting another 3 colleges in operation. There are 3 fishery sciences college, those have come up. There are 2 dairy technology college, those have come. And for all these, for construction, for the hostels, for administrative building, the auditorium, I must mention that Dr. Ramaswamy, the Secretary of Animal Husbandry, Dairying and Fishery, he has been helpful in giving all support in terms of finances, policy support, and
As a result, what we see that it will be the largest university as far as the veterinary, fishery and dairy science is concerned in the country. So all kudos to all the people who are sitting over here. Now, as I told that in 2000 we started our journey. Now we have got all these colleges. There are other facilities, those have also come up, that we have got 3 KVKs, we have got Wildlife Research and Training Center, and through the schools that we have for the diplomas, we have 109, the largest ever number that we have in all the universities, that we are developing the livestock supervisors, which are spread across all the Maharashtra state, and thereby we are ensuring that the knowledge, skills, and the innovation that reach the farmer who are in the need for the veterinary care. As regards the MAFSU's achievements, I must tell some of the things so that you are aware that how these people who are working day and night, because we are working on the 40% of the sanctioned strength, still our achievements are so large that we have been instrumental in conservation of the native germplasm. And I was discussing with the chief guest that the wealth of Maharashtra in terms of the cattle breeds, those 6, those have been increased. There are some buffalo breeds. Recently, last month only, we registered another breed beside the 4 or 5 breeds that we are maintaining. There are typical goat breeds, those are available over here and are spread all over Maharashtra, like Usmanabadi, Kokon Kanyal, Berari, Sangamneri. And another very good thing that has happened, that the central government, which is proposing that we should advance the number of natives in the local tract, and in that process we have adopted the technology like IVF, ETT, in vitro fertilization and embryo transfer program. And during last 18 months, we could establish 158 pregnancies. So that is the record as far as I know, and the conception rate that we achieved, nearly 24%, is a phenomenal when we consider the other universities who are, or other institutes which are practicing this particular technology. There are some new breeds which are in pipeline that we are going to register soon. There are some breeds which have been conserved and for which the awards have been given to the faculties and also the interested persons who are engaged in conservation. Like for the Gaudo and for conservation of Red Kandari, Amrutkar, Dr. Amrutkar, he has been given the conservation award. Regarding the research excellence, there are more than 30 projects those are undergoing with 32 crores of investment, and we have completed nearly 177 projects since inception with outlay of 135 crores. During the last 2.5 years, we have 5 patents granted, 5 patents are in the pipeline. We have developed 18 technologies, 6 mobile apps, and 8 diagnostic protocols. These are for all those people who are working in the field and also for the welfare of the farmers who are maintaining the livestock. As far as the research output in terms of the research papers are concerned, we have published more than 823 research papers, and those are beyond the respected level of NAS rating of 6.0. As far as technology transfer to the people is concerned, the nanotechnology, one of the best utilization of the technology has been done to combat the antimicrobial resistance, and that has also been commercialized. MAFSU means mineral mixture, then the Vimozyme enzyme, which is developed for all, yes. So all these are our activities that we have done. There are very many training in the extension that we have undertaken. We have benefited more than 10,000 farmers. The noteworthy thing is that the Pashu Sakhis, the village women, rural women, those have been trained more than 1,000, and those have been trained for AI as well as the primary aid. So this particular conference, which is being held on the theme of the role of canine in One Health, building partnerships and resolving challenges, I think it is very apt because we are working on One Health, and there are some projects those are we are conducting with the help of the international agencies.
So here in this particular convention, we have the interdisciplinary collaboration. We are also thinking to address the multifaceted challenge that this particular pet, as regards the canine health, is concerned, and critical role the dogs that play in the life of the people as well as the society. As you all know that the pets have become the part of life of many of the people, and since time immemorial, we have seen that since domestication, it is the only animal which has been considered to be first domesticated 12,000 years back, and it has been serving the mankind for all the purposes. And new role besides the security in all workplace that we know for the pets, whether it is the combating the terrorism, use in the safety kind of travels, and also recently what we identified in the nuclear families, we are using pets for the purpose of giving the medicinal value to the people, especially the elderly people, and that role has been taken as a one new challenge for those people who are feeling lonely. So beside this, I feel that there are many things that will be discussed in this particular conference that is for 3 days. I congratulate here the organizers, speakers and participants for bringing this important theme to the forefront. And with this success of this symposium, I wish that they will generate that information which will be really useful for the one health program where the health of the animals as well as the human being and as well as the environment that is guaranteed. So on this occasion, I again appeal that the era that we are passing through is regarding the livestock revolution. We already know that livestock as a productive animal, it has attained all heights. Whether you take the case of milk production, we are number 1. Second, as far as egg production, and also the meat production, 5th in the world. So in doing so, what we are thinking that the contribution of the livestock in the economy is increasing day by day. We were 24% and today we stand to be 30%, nearly 1/3 of the total economy. But with this kind of thing, we also know that the kind of proportionate budget outlay that is not being diverted to the animal sector. So on this occasion, what I feel that if we are contributing more than $10 lakh crores of rupees in the GDP, as compared to rice and wheat alone, together they contribute nearly 6.5 lakh crores. And also our poultry, which is growing at a rapid rate of 7% or 8%, they are contributing 2.5 lakh crore. Why the budget allocation should not go to this sector and bring out the livestock revolution? Very happily, I must state that the Union government, while presenting the budget for 26-27, they have allocated more than 8,000 crore for this particular sector through the newly developed ministry. Now this allocation, then the research focus and development focus also must come through all the development efforts and also the research efforts. I propose that on this occasion, if we can take up the issue that we also can have the Council for Veterinary Research separately as compared to the other councils which are already in place, like ICMR, ICAR, DBT, CSIR. Possibly we can help improve the livelihood, improve the entrepreneurship, and also improve the nutritional care of all the living livestock, living livestock as well as the animal, the people around us. So let us move forward, share the commitment through whatever the convention that we hold, and we pray that the kind of approach that we need and the support that we need for development of such livestock revolution, we all are together. And we seek the blessings of all those who are sitting over here and all the elders who are sitting in the audience. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring words and for your exemplary leadership at the helm of the university. Now we will have the address by the President of ISACP, Professor Dr. S. Prathaban. Sir, please.
the most respected Honorable Dr. Shri Mohan Bhavasji, Honorable Dr. Parnefi ji, President of the Veterinary Council, Honorable Dr. Umesh Chandra Sharma ji, the Secretary, Animal Husbandry, Dairy Development, Honorable Dr. Ramaswamy ji, Vice Chancellor, Honorable Dr. Nitin Patel ji, President Nawar, Dr. Barbude ji, Organizing Chairman Kode ji, Secretary Nawar, Dr. Pogad ji, Executive Council Member, Dr. Sudhir Dive ji, and Organizing Secretary, Dr. Srish Upadhyay ji. I'm then former Vice Chancellors, Dr. Dashankar ji, Dr. Balachandar ji, the university officers, executive members of the ISSAP, university officers of the university, staff, the practitioners of Maharashtra, and the wonderful students of Nagpur Veterinary College. Now, when I conducted the first All India clinical case competitions, the maximum participation from the students of Nagpur Veterinary College. Totally 48 students participated from this college in 2008 and won many prizes. Now, I'm presenting my presidential address. Human and animal medicine interface at many points. These include basic principles of medical sciences, research on disease-causing organisms, disease transmission, and diagnostic treatment methods, or to name a few. Also, whether in developed or less developed countries, alternative practices including traditional, indigenous, and local ones are gaining importance and recognition in both medicine sides. Given these commonalities, might it make some sense to combine elements of human, animal, traditional, and modern medicine in health provisions, especially in least developed countries or developing countries? One health initiative was formed in 2007 by American Medical Association and American Veterinary Medical Association to promote, improve, and defend the health and well-being of all species by enhancing cooperation and collaboration between physicians, veterinarians, and scientific health professionals. Many public health professionals also view environmental health as essential to the purpose of One Health. The basic idea is that human health could not be protected unless animal health and environmental health are also addressed. Recent incidents involving many zoonotic diseases and public health consequences of environmental degradation have led toughened calls for veterinary medicine, human medicine, and environmental health approaches to be considered and prioritized. One means to explore the health perspective is to assess global climate change, since it affects the environment on which humans and animals, as well as the disease vectors and pathogens affecting both groups. And one of the very important One Medicine, One Health concept in India is rabies. Whereas rabies control solutions in India is done very effectively, researchers and policy makers jointly promote evidence-based policy making. The landscape of rabies control is complex, with actors from multiple sectors including animal welfare, public health, veterinary medicine, and civil administration, with different perspectives and expectations of a rabies control program. In such an environment, simple intervention strategies are not likely to meet the needs of stakeholders. Instead, an approach that recognizes while seeking to improve the interdependence of human, animal, and environmental health. This may bring multiple perspectives together. More epidemiological studies and implementation research should be conducted with a wider set of actors. For us, the recognition of the complexity of rabies control is the first step to developing more effective, acceptable, and sustainable policy solutions. One Health is a contemporary term describing the collaboration of various scientific disciplines in the pursuit of better health for humans, animals, and ecosystems. It is an emerging area of professional practice, arising the recognition of the growing interconnection and overlap economic, cultural, and physical of the constituents. One Health understands that humans do not exist in isolation, but are part of larger total living ecosystem
and the activities and condition of each member affect the others. One Health seeks to shift the paradigm, the current individual or disease-centered approach to a system or community-based approach. It is a creative way to view human, animal, and ecosystem health practitioners and environmental scientists in a collaborative and a synergistic effect. The concept of One Health is defined as a collaborative effort of multiple disciplines working locally, nationally, and globally to reach optimal health for humans, animals, and environment. The concept of one medicine has been discussed for many years, but for all practical purposes, and despite the ongoing discoveries of numerous commonalities in the physiology and pathophysiology and human and veterinary medicine, one medicine concept was lost and the human and veterinary medical disciplines developed into separate professions. One reason for the split is that over time, societies have grown multiple professionals such as public health, human medicine, bioengineering, animal science, and more professionals likely to see both people and their animals. So he or she, therefore, has awareness of the potential threat of zoonotic diseases and has the ability and responsibility for detections of zoonotic and emerging diseases. Fortunately, veterinarians have considerable training in comparative medicine, zoonosis, and public health. Physicians, on the other hand, do not receive extensive training in comparative medicine and zoonosis. Therefore, veterinarians are in a better position to discover public health threats than the physicians. There are also ideal positions for establishing a disease surveillance system using pets as sentinels of disease exposure in human environment in the world. In addition, veterinarians in companion animal practice would work together with family physicians and introduce to veterinarians as well. So veterinarians, regardless of their field practice, all play a significant role in human health and animal health. The future will most likely be more collaboration of veterinarians from the fields with wildlife. Based on various recommendations from experts, many steps are taken by the profession and government. Still, there is a scope to improve joint cross-species disease surveillance and control in efforts of public health. Joint efforts in better understanding of cross-species disease transmission through comparative medicine and environmental research. Joint efforts in the development of new diagnostic methods, medicines, and vaccines for the prevention and control of the diseases through the species. So I commend the ISACP and Nagpur Veterinary College for jointly organizing this seminar on One Health. So I encourage all the participants to actively engage in discussion, share insights, and take full advantage of the expertise and experience gathered in these conventions. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your kind words and entrusting NVC with the opportunity to host this prestigious convention. We now have the privilege of listening to the President, Veterinary Council of India, Dr. U.C. Sharma, sir. Sir, you can use the left side of the podium for your address, sir. आज के इस रोल ऑफ कैनाइन इन वन हेल्थ के इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के प्रमुख परम पूज्य सरसंघ चालक जी, जब हम सब वेटरनरियन के बीच में आते हैं तो पूरे देश के वेटरनरियन अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आपका वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस देश के 1 लाख वेटरनरियन लगभग जो संख्या है उनकी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। आज ही के दिन तिरुपति में देश की महिला पशु चिकित्सकों का एक सम्मेलन चल रहा है।
इस महाविद्यालय के एलुमनाई वाइस प्रेसिडेंट संदीप विनायक राव इंगले जी वहाँ हैं, और हम सब इस देश में, यही हमारी कल्पना भी है और यही हमारी आशा है कि इस देश के वेटरनरियन गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएं। हमारा कर्तव्य भी यही है कि जितने भी मनुष्य के अलावा जीव हैं सबको गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना, ये हमारे डीएनए में भी है, और हम लोग शुरू से ही पर्यावरण और जीवों के प्रति हमारी जो संवेदनाएं हैं वो शुरू से रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हम जब वेटनरी की प्रोग्रेस देखते हैं, देश में हम उसके अचीवमेंट देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मंच पर सम्मानी मंच उपस्थित हमारे एमएलसी फुके जी, हमारे इस यूनिवर्सिटी के कुलपति आदरणीय पाटिल सर, हमारे एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी, हमारे लिए गौरव की बात है वो वेटरनरियन भी हैं और आईएएस भी हैं साथ में, इससे हमें और बल मिलता है प्रशासन में भी। और इस सभागृह में उपस्थित सभी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए सभी वेटनरी भाइयों बहनों, मैं आप सभी का वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश में एक समय था हमारे लिए चैलेंजेस जैसा लिखा है ना, चैलेंजेस एक बहुत है। ह्यूमन में एक स्पीसीज है, लेकिन एनिमल में कोई तोता लेके भी आता है, हाथी के लिए भी आता है। ये वेटरनरियन का कर्तव्य है कि उसका वो गुणवत्तापूर्ण इलाज करे। इसीलिए वेटरनरी का जो अभी प्रोफेशन है, जिसमें कैनाइन प्रैक्टिस में इस देश के वेटरनरियन ने अपने सामर्थ्य के बल पर, किसी सरकार के दम पर नहीं, उन्होंने देश में जो कैनाइन प्रैक्टिस का जो एक अपना हॉस्पिटल इस्टेब्लिशमेंट किए, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, वास्तव में इस देश के वेटरनरियन का मैं वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार से हमने अपने वैल्यू एडिशन करके देश में वेटरनरी प्रैक्टिस को हम लेके गए। आज परम पूज्य सरसंघचालक जी, देश में 17 वेटरनरी यूनिवर्सिटी है। एक समय हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में हमारे कॉलेज हुआ करते थे। 2014 में हम मात्र 35 कॉलेज थे इस देश में, 60 वेटरनरी सीटें एडमिशन होती थी। लेकिन आज 10 साल में हम लगभग 84 वेटरनरी कॉलेज हैं। उस वक्त 2500 बच्चे एडमिशन लेते थे, आज 7500 वेटरनरी में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। इसीलिए इस देश के युवाओं ने, खासकर नारी शक्ति ने इस प्रोफेशन को बहुत अपनाया है। 42% महिला पशु चिकित्सक छात्राएं इस वक्त देश में काम कर रही हैं। हम लोगों ने वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से भी कहा है कि सरकार देश में, मैं देखता हूं कई बार हमें सुपर स्पेशलिटी की आवश्यकता पड़ती है। हमने सरकार से, भारत सरकार से क्या है कि जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, इसी प्रकार से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस की स्थापना देश में होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यकता है देश में, और इसका प्रपोजल भी अभी देश में चल रहा है। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से देश में कैनाइन को लेके और जो कहीं ना कहीं डॉग को लेके लोगों में बड़ी भावनाएं रहती हैं। कई बार हमारे पास फोन आते हैं बड़े दूर से कि हमारे अपने डॉग को सुपर स्पेशलिटी, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, उसकी किडनी और ये सब पूरा, आजकल तो स्पाइनल सर्जरी तक हमारे वेटरनरियन इसमें कर रहे हैं। यानी जिस प्रकार तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है कि अभी हम लोग जिस प्रकार से सर बोल रहे थे कि आज जो आवश्यकता है सर, ICVR इंडियन काउंसिल ऑफ वेटरनरी रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने वर्ष 2019 में पशुपालन डेयरी मंत्रालय अलग बनाया, और उसका प्रभाव यह हुआ कि आज भारत में सबसे ज्यादा, कोविड के समय भी भारत में सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर थी तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की थी, 6.8%। अगर इसी प्रकार अगर रिसर्च का भी एक अलग से अगर एक बढ़ता है, हम देखते हैं कि आजकल जो ह्यूमन में न्यू इमर्जिंग डिसीज है उसमें 85% कहीं ना कहीं जेनेटिक डिसीज है। आने वाले समय में वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वेलेंस, डायग्नोस्टिक लैब बहुत आवश्यक है। अगर ह्यूमन हेल्थ को बचाना है, वन हेल्थ का जो कंसेप्ट ये है कि मानव हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ, तीनों हेल्थ को आपको एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। हेल्थ का मतलब ह्यूमन हेल्थ नहीं है।
इसी दृष्टि को रखते हुए मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पर विचार करे और ICVR का जितनी जल्दी से अगर हम करते हैं तो हम इस वेटरनरी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ेंगे। आज के समय में देखा जाए तो वेटरनरी भारत में 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनकी आजीविका का मुख्य साधन वेटरनरी कहीं ना कहीं पशुपालन है। GDP में हमारा हिस्सा लगभग 12 लाख करोड़ है। हालांकि वो गणना कुछ ठीक नहीं है, GDP की जो गणना है उससे हम कई बार सहमत नहीं होते। हमारे यहाँ हम बैलों से जो खेती करते हैं उसकी एनर्जी को इसमें नहीं जोड़ा है, हम जो ऊर्जा का सेव करते हैं। हम कहीं ना कहीं मिल्क का जो वैल्यू एडेड होके जो बनता है उतना करोड़, कितना करोड़ जाता है उसको हमने नहीं जोड़ा है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो बहुत सबसे ज्यादा रोजगारी उपलब्ध कराने वाला अगर कोई है तो यही है। दूसरा, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं। भारत और यूरोप की जो तुलना है वेटरनरी साइंस में बहुत अलग है पशुपालन के संबंध में। वहां बड़े बड़े फॉर्म है, बड़े बड़े किसान हैं, लेकिन भारत में जो दूध उत्पादन है 90% दुग्ध उत्पादन छोटे किसान जो जिनके पास 2 से 4 पशु उनके द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ा मॉडल देश में अगर देखना है तो अमूल का जो मॉडल है देश में कॉर्पोरेट सेक्टर का, 36 लाख महिलाओं के खाते में 90,000 करोड़ रुपए का साल भर का उनका खातों में जाता है। अगर उस 12,000 करोड़ दूध का जो दूध है 90,000 करोड़ की वैल्यू मार्केट देखे तो 12,000 करोड़ है। यानी आर्थिक समृद्धि अगर इस देश में लाना है पशुपालन के माध्यम से तो छोटे छोटे किसानों का जो उत्पादन है उसके मूल्य को वैल्यू एडेड करके मार्केट में जब वो आता है, जब हम कभी अमूल, सांची, नंदिनी, अगर हम इस प्रकार के प्रोडक्ट का जब हम उपभोक्ता बनते हैं उसके, तो कहीं ना कहीं देश के उन किसानों के लिए काम करने का काम करते हैं, उनको उसका फायदा होता है। इसलिए हमारे लिए यही मॉडल सर्वश्रेष्ठ मॉडल है कि हम वेटरनरियन से भी देश में ये आग्रह करते हैं कि जब वो फील्ड में काम करते हैं, कई बार हमारे प्रोफेशन के बारे में हम लोग ये मानते हैं कि जब हमारा वेटरनरी डॉक्टर जो गांव में काम करता है, जब वो उस गरीब किसान के घर पे पशु चिकित्सा का काम करने जाता है, परम पूज्य सरसंघचालक जी कुछ समय फील्ड में काम किए हैं, एक बार हम लोग बता रहे थे, तो जब हम उसके घर पे इलाज करने जाते हैं तो उसका परिवार हमारी तरफ जिस दृष्टि से देखता है, जब हम उस इलाज करके आते हैं उसका पशु ठीक होता है, उसके माध्यम से जब वो दूध या जो भी पशु उत्पाद है उसको बाजार में जाता है, उसको बेचता है, उससे उसका घर चलता है। एक करुणा में ये जो हम काम करते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इस देश के वेटरनरियन का हो सकता है भौतिक अकाउंट कम हो, उसका बैंक अकाउंट कम हो, लेकिन उसका ईश्वर के यहाँ उसका जो अकाउंट है वो इतना बड़ा है, इसे कोई वो नहीं कर सकता। इसलिए महान प्रोफेशन है, हमको गर्व होता है। कई बार हमको अपने प्रोफेशन में गर्व होता है कि हम अपने जीवन में, हमने भगवान ने हमारे हिस्से में वो काम दिया है। एक तो हमने उस मूक प्राणी की सेवा की है जो बोल नहीं सकता, उसकी चिकित्सा का काम किया है। हमेशा वेटरनरियन से कहता हूं कि ईश्वर हमें कभी भी यही काम दे, यही काम करने का अवसर प्रदान करे। और सरकारों को भी आजकल मैंने देखा है कि भारत में 2014 के बाद जो नेतृत्व आया उसने इस सेक्टर को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी की। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चूंकि सरकार में निजीकरण भी होता है, निजी महाविद्यालय भी आते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसमें बहुत क्वालिटी का काम करके रखा है, गुणवत्ता का काम करके रखा है कि आप कॉलेज खोलिए लेकिन गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फैकल्टी बहुत आवश्यक है, विदाउट फैकल्टी कॉलेज ठीक नहीं है। इसलिए बीसीआई ने हमेशा अपने, जब से बीसीआई बनी है आज तक, उसने हमेशा अपने गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए क्वालिटी पे हमेशा कंट्रोल किया है। और इसका परिणाम ये आज तक किसी भी एजेंसी ने, किसी हाई कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने हमारे इस वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया पे कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आज भी हाई कोर्ट ने 25 में डिसीजन दिया, उसमें उन्होंने कहा कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रही है और उसे मिनिमम स्टैंडर्ड का अच्छे से पालन कराना चाहिए हमको। इसीलिए माननीय सेक्रेटरी साहब, आपके महाराष्ट्र में भी कॉलेज नए आने वाले हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप वहाँ क्वालिटी रहे। और मेरा एक अनुरोध और भी है, इस भारत में बहुत बड़े कॉलेज है, 50 साल हो गए, नागपुर वेटनरी कॉलेज भी है, महू वेटनरी कॉलेज है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। महू जबलपुर का 1948 का कॉलेज है, कई नागपुर के लोग वहाँ पढ़ते थे। ऐसे कॉलेजों को वन टाइम ग्रांट अगर मिलती है तो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और उन कॉलेजों को ठीक करने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हमको सुनिश्चित करनी चाहिए। इसलिए आज के इस अवसर पर यहाँ 3 दिन संगोष्ठी चलने वाली, हम सब लोग परम पूज्य सरसंघचालक जी को सुनना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, उनसे हम पूरे देश को दिशा देना काम कर रहे हैं। हम वेटरनरियन
मैं जब भी नागालैंड जाता हूँ, किसी भी राज्य में जाता हूँ, तो हमेशा वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे अपने हैं, देखो हमारे प्रोफेशन वो हैं। तो आज आपके आने से हम सबको बड़ी खुशी होती है और बड़े मन की प्रसन्नता होती है। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, हम सब यही आपके सामने संकल्प लेते हैं कि अपनी भारत माता की सेवा जिस प्रकार से अन्य प्रोफेशन कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, कृषि वैज्ञानिक हो, चाहे स्पेस के वैज्ञानिक हो, हमने भी अपनी पूरे आज़ादी के बाद अपने पूरी तन्मयता के साथ, इस देश में एक समय ऐसा था, हमेशा से नहीं था, कि दूध के लिए हमें दूसरे देशों पे अमेरिका से दूध पाउडर आता था, इस देश में बड़ी कमी थी, क्योंकि हम बहुत हजार वर्षों तक गुलामी के बाद हमारा सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका था। लेकिन हमने अपनी मेहनत के दम पर आज दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत बना। इसमें मैं इस देश के वेटरनियन का भी अभिनंदन करता हूं। इसलिए अमृतकाल में हमने भी अपना काम किया है इस देश में, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार अपने देश के किसानों की समृद्धि में हम सब सहयोगी बने, इस देश के मूक प्राणियों की सेवा को हम ठीक से कर सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने काम को ठीक से कर सकें। आप सभी ने यहाँ बुलाया, मुझे धैर्य के साथ सुना, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय डॉक्टर यूसी शर्मा सर, आपके प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक सब शब्दों के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। It is now our honor to invite Dr. Ramaswamy N, IAS, Secretary, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Maharashtra, to share his invaluable thoughts with us. Sir, please. Namaskar. Today I am honored to be in this function in the presence of Dr. Mohan Bhagwatji, Sarsang Chalak, RSS, Dr. Paranay Fuke sir, Dr. Nitin Patil ji, Vice Chancellor, Dr. Pratapan, President of the association, and he was my professor also, Professor of Medicine in Namakkal Veterinary College, Dr. Sharma ji, Chairman VCI, Dr. Upadhyay, Dr. Kode, Mr. Sudhir Diveji, and one more professor, ex-Vice Chancellor, Dr. Balachandran, who taught me pathology for 3 semesters, who is also present here. I welcome all my colleagues, officers, scientists, practicing veterinarians from across the country for this function on behalf of Maharashtra. It is the most relevant topic that you have taken up in this conference. My slide is not moving. Mother slide move kara. So, as we know, during COVID, we have seen what kind of problem, havoc a pandemic can create. Similarly, more than 60% of all the human diseases have origin in animals, and around 75% in new emerging diseases that we all know as vets here. And as you know, we have that National Institute of One Health also in Nagpur. This is the most appropriate location to have such a conference. Next slide, please. So in this, I will touch upon only one, go back. So when we discuss about One Health, we cannot avoid discussion on rabies. Lot of discussion going on regarding the case which is there in Supreme Court. So we have almost 20,000+ deaths of rabies in India. I have compiled all the data of Maharashtra based on census. If you see, we have almost 17 lakh stray dogs in Maharashtra. This data we have up to ward level. And almost 9.7 lakh dog bites are happening. And we are one of the major state in contributing in rabies deaths. In last 1 year, we had almost 20 deaths, and out of that, more than 60% of all such rabies deaths are children with less than 15 years of age. So this is the most appropriate forum for requesting for some solutions. Next slide. So Government of Maharashtra had initiated some of the preventive measures. So the photo which you are seeing is the veterinary hospital I have built as Commissioner of Navi Mumbai Corporation.
So wherever I worked, I had the soft corner for our profession, and I tried to bring some institution. And I requested Honorable Chief Minister, sir, during his 100 days target that he had given in this new government. So he was kind enough to approve 29 such hospitals in all municipal corporations of Maharashtra. So that will help and go a long way in disease prevention, especially of these zoonotic diseases. We had 2 multi-specialty hospitals. One is operational in Pune. The second multi-specialty hospital is worth 80 crores that we are coming up in Goregaon campus. So again, that will also support a long way. So the major issue here is the animal birth control. As we have seen and analyzed the data, Maharashtra is most urbanized state. Almost like Tamil Nadu and Maharashtra are the most urbanized states. When we have urbanization, we have twin issues, population, civic community issue. At the same time, we have large population of stray animals. We have 4 lakh stray dogs in Pune alone, Pune city and Pune periphery alone. So the kind of ABC that we are doing is having a lot of limitations. I have analyzed data of ABC which is conducted in many corporations. Hardly it is 2 to 3, at the most 7, 8. So with this rate, we cannot control this stray dog population as per our desire. So I request this honorable gathering that we should find a technical solution. I was discussing with Dr. Upadhyay also. We should use either transvaginal laparoscopy, ovariectomy, or like in human medicine, we are using laparoscopy for each and every disease. Even for complicated disease like pancreatic cancer, that can be done with laparoscopy now. So we should train more and more veterinarians in laparoscopic surgery, non-invasive surgery, because post-operative care and keeping the animal for 4 or 5 days, especially for the small municipalities, is a big task. We tried with all mobile units and all. Operation is simple, but post-operative care involves a lot of cost and manpower. And if we can find some solution to this kind of easily adaptable and scalable method, it's not a rocket science, but we need more manpower to be trained in laparoscopic surgery, and we need such kind of centers in every district and every bigger municipal corporation, and we should have a mobile unit also to reach to the small municipal councils where the facilities cannot be done. So as all my previous speakers spoke about One Health, there is no human health without animal and environment health. Definitely we all should work for that. This is the most appropriate forum in these deliberations over today and tomorrow. We should come up with a clear-cut policy for this ABC, dog control and zoonotic diseases. And it is unfortunate that we are losing 18 to 20,000 people for rabies in the country, and ours is also one of the most affected state in the country. So we should aim for no rabies death in the country by 2030 as per the government policy also. We should all work for that, and we should come up with a solution. And for this honorable forum, I want to inform this honorable gathering that Dr. Sharmaji was asking for ICVR. And similarly, Maharashtra government is the first government in the country to give agriculture status to animal husbandry and fisheries. So I have joined 1 year back, then I made this proposal to Honorable CM sir. The entire cabinet, Honorable CM sir were kind enough to give that agriculture status. The benefit of the agriculture status is that we will get all the benefits which are available to agriculture, whether it is a KCC credit card with 0 interest, or electricity subsidy for all our farms, including poultry farms. So it will go a long way. And in fact, I requested Government of India also to take up this issue across the country, because we are contributing more than 25% of the GDP in agriculture sector. And our sector needs more attention from all the authorities so that we can invest more, and this is the most employment generating department, animal husbandry and fisheries. We are having almost double-digit growth. So if we have to create employment in rural area, definitely we should have an integrated farming approach with these kind of facilities. And I once again thank the organizers for inviting me for this function. Thank you so much.
Thank you, Dr. Ramaswamy, sir, for your enlightening words and sharing your valuable perspectives with us. Now I respectfully invite Dr. Parinay Fuke, MLC and EC member, MAFSU Nagpur, for his address. Sir, please. Indian Society for Advancement of Canine Practices, National Association for Welfare of Animals and Research, Nagpur Veterinary College, Maharashtra Animal and Fisheries Sciences University नागपूरच्या संयुक्तिक विद्यमानाने आयोजित 22nd Annual Convention of Indian Societies for Advancement of Canine Practices आणि National Synopsis on Role of Canine in One Health, Building Partnership and Resolving Challenges या कार्यक्रमात इथे मंचावर उपस्थित जगातील सर्वात मोठ्या संघटनेचे दूरदर्शी व प्रेरणादायी नेतृत्व करणारे परमपूजनीय संघचालक माननीय डॉक्टर मोहनजी भागवत साहेब तसेच या मंचावर उपस्थित आणि आपल्याला मार्गदर्शन करून गेलेले वेटरनरी काउन्सिल ऑफ इंडिया नवी दिल्लीचे अध्यक्ष डॉक्टर उमेशचंद्र शर्मा साहेब, महाराष्ट्र शासनाच्या ॲनिमल हस्बंडरी, डेअरी डेव्हलपमेंट आणि फिशरीज विभागाचे सचिव सन्माननीय डॉक्टर रामास्वामी साहेब, या कार्यक्रमाचे आयोजक आणि मापसू विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर नितीन पाटील साहेब, मापसूचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर डॉक्टर सुधीरजी दिवे साहेब, ISACPचे अध्यक्ष डॉक्टर S प्रधानाबन, या कार्यक्रमाचे ऑर्गनायझिंग चेअरमॅन आणि असोसिएट डीन डॉक्टर JP कोरडे, डॉक्टर शिशिरजी उपाध्याय, आदरणीय मंच आणि इथे उपस्थित सर्व मान्यवर प्राध्यापक वर्ग, विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी आणि सर्व मापसूचे अधिकारी, कर्मचारी, बंधू भगिनींनो, मित्रांनो, खरं म्हटलं तर या इंडियन सोसायटी फॉर ॲडव्हान्समेंट ऑफ कॅनिन प्रॅक्टिसेसच्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून जगातील सर्वात म्हणजे भारताला जगात सर्वात प्रथम क्रमांकाचा देश करण्याकरता ज्यांचं अवरात्र जे प्रयत्न करत असतात असे परमपूजनीय डॉक्टर मोहनजी भागवत साहेबांसोबत हे मन साजा करण्याचं किंवा या मंचावर त्यांच्या व्यासपीठावर त्यांच्यासोबत बसण्याची मला संधी मिळाली. मी स्वतःला फार भाग्यशाली समजतो. मोहनजी स्वतः एक पशुवैद्यकीय चिकित्सक आहे आणि या क्षेत्रामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. या कॉलेजमध्येच त्यांनी त्यांचं शिक्षण घेतलेलं आहे आणि निश्चितच मला जसं संपूर्ण देश त्यांच्यावर फार त्यांचा अभिमान आहे तसंच सगळ्या वेटरनरी डॉक्टर्सला सुद्धा त्यांच्यावर फार मोठा अभिमान आहे. आज वन हेल्थमध्ये आपण श्वासांची भूमिका जी आहे म्हणजे कुत्र्यांच्या भूमिकेवरती भागीदारी निर्माण करणे आणि आव्हान निराकरण करणे या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर इथे आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आयोजकांचं मनपूर्वक आभार मानतो. वन हेल्थ ही संकल्पना सांगते की मानव, प्राणी आणि पर्यावरण यांचं आरोग्य एकमेकांचे घट्ट जोडलेलं आहे. या संकल्पनेत श्वासांची जी भूमिका आहे, श्वानांची जी भूमिका आहे ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. रेबीज सारख्या झुनोटिक आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी श्वानांची लसीकरण हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. भारत सरकारने 2030 पर्यंत रेबीज निर्मूलनाच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय कृती आराखडा राबविण्यात आलेला आहे. तसेच प्राणी जन्म नियंत्रण, ॲनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीम यांच्याद्वारे भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन आणि रोग नियंत्रणावर भर दिलेला आहे. डॉक्टर रामास्वामी साहेबांनी निश्चितच महाराष्ट्रामध्ये 70 लाख कुत्रे म्हणजे असल्याचं आणि त्यामुळे होणारे रॅबिसचे आकडेवारी आपल्याला इथे सादर केलेले आहे. आणि निश्चितच या वन हेल्थ मिशनच्या माध्यमातून हे वन हेल्थ यशस्वी होण्यासाठी पशुवैद्यकीय असणार, वैद्य असणार, डॉक्टर असणार, पर्यावरण विभाग असणार आणि समाज यांची भागीदारी अत्यावश्यक आहे. एकत्रित प्रयत्नामुळे आपण निरोगी, सुरक्षित आणि संतुलित समाज निश्चितच घडवू शकतो. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची संख्या 20,000पेक्षा जास्त वाढवण्याकरिता खाजगी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय महाविद्यालय व अर्थ व्यावसायिक
पशुवैद्यकीय प्रशिक्षण केंद्र, पशुसाठी रुग्णालय, निदान केंद्र, प्रजनन केंद्र उभी करण्यासाठी कर्ज आधारित भांडवल अनुदान योजना सुरू करण्याचा प्रस्तावित केलेला आहे. निश्चित यामुळे आपला जो उद्देश आहे तो निश्चितच साध्य होण्यात आपल्याला फार मोठी मदत होणार. मानव, प्राणी आणि पर्यावरण यांचे संतुलित राखण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित येऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून आपण अधिकच निरोगी आणि सुरक्षित समाज घडू शकू असा मला पूर्ण विश्वास आहे. आपले सर्वांचे मनापूर्वक आभार आणि धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. माननीय डॉक्टर फुके साहेब आमच्या वार्षिक अधिवेशन व राष्ट्रीय परिसंवादाला उपस्थित राहून आपल्या प्रेरणादायी मार्गदर्शनाने आम्हा सर्वांना प्रोत्साहित केल्याबद्दल आम्ही आपले मनपूर्वक आभार मानतो. Now, may I request the esteemed dignitaries to kindly release the ISACP Compendium cum Souvenir. Can we have a round of applause, please? This compendium brings together the abstracts of research papers, messages from our distinguished leaders, and acknowledgement from our valued sponsors. Kudos to the organizing committee for their meticulous efforts in compiling and bringing out the compendium cum Souvenir in a timely manner. And now, the moment we have all been eagerly waiting for. It is my proud privilege to respectfully invite our chief guest, Dr. Mohanji Bhagwat, Sar Samchalak Rashtriya Swayamsevak Sangh Nagpur, to kindly address the gathering. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सभी आचार्यगण, छात्र बंधु भगिनी, मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि फिर एक बार, यद्यपि मैं इसी कॉलेज में पढ़ा हूं, पशु चिकित्सा के क्षेत्र के बाहर आकर मुझे 50 साल हुए, तो कुछ भी याद नहीं, ऐसे तो नहीं कहूंगा, लेकिन आज के विषय के बारे में बोलने का मुझे अधिकार नहीं, उसकी जानकारी आपके पास है। ऐसा होने के बाद भी एक पूर्व छात्र के नाते याद करके आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब इस कॉलेज में मैं पढ़ा तो इस परिसर का रूप क्या था और आज क्या है, ऐसा सोचता हूं तो बहुत आनंद होता है। बहुत सारा विकास दिखता है, इमारतें बनी है, अंदर काम भी चल रहा है, और सोचता हूं तो ध्यान में आता है कि ये केवल अपने कॉलेज की बात नहीं है, कुल मिलाकर वेटरनरी प्रोफेशन का जो विकास भारत में हुआ है उसी का ये एक प्रकार से अभिव्यक्ति है। हम जब यहां पढ़ रहे थे तो पेट प्रैक्टिस था, कोई बिल्कुल नाम भी नहीं था, तो हमारी सोच भी छोटी थी, क्या करना है, ग्रेजुएट होके, बॉन्ड था सरकार का, नौकरी रीढ़ी थी, देहात में जाके करना है। तो एक लिमिटेड स्कोप सामने आता था, समाज में भी प्रतिष्ठा की वही स्थिति थी, 4 लोगों में हम वेटरनरी डॉक्टर है ऐसा कहना हिम्मत करनी पड़ती थी, करते थे उस समय भी हम लोग, परंतु करनी पड़ती थी। अब आज ऐसा नहीं है,
क्योंकि चाहे वो अपना देहाती इलाका हो या शहरी इलाका हो, दोनों तरफ पशुओं का महत्व बढ़ गया है। और जैसा आपने कहा कि अब अनुभव के आधार पर सारा विश्व सोच रहा है, हम तो उसके पहले से सोच रहे थे। एक देश के नाते हमारी परंपरा में है कि प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि और मनुष्य, ये सभी एक ही पर्यावरण के अंग है और एक के बिना दूसरे का चलता नहीं। और साथ रहे तो कुछ खतरा भी हो सकता है। जूनोटिक डिसीजेस, ऐसा शब्द आपने उपयोग किया, लेकिन साथ रहना तो अनिवार्य है क्योंकि एक ही पर्यावरण के अंग है। तो ये समझकर इन सबको साथ लेके रहना कैसे, इसको मनुष्य को सोचना पड़ेगा। अभी एक निर्णय आया कुत्तों के बारे में, दिल्ली में बड़ा हो हल्ला हुआ। अब दो एक्सट्रीम का विचार चल रहा था, सभी कुत्तों को मार डालो अथवा कुत्तों को बिल्कुल हाथ मत लगाओ। तो मनुष्य को कुत्तों को साथ जीना है तो कैसे जीना है? तो इसलिए मैंने ऐसी कहीं मुझे पूछा तो मैंने बोल दिया कि भाई इसका एक बीच वाला रास्ता भी हो सकता है। कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए स्पेइंग हो सकता है, उनसे खतरे से बचने के लिए कई बातें हो सकती है। अब ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं एक पशु वैद्य हूं। मुझे कहा गया बार बार सरसंघ चालक आया है, सरसंघ मैं जब इधर की या उधर की चढ़ाई पर कदम रखता हूं या वाहन हमारा जाता है तो मैं केवल इस कॉलेज का छात्र बन के रहता हूं। उसी हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये जो सारा दृश्य यहां उपस्थित हुआ है वो आगे के लिए भी हमको सोचने के लिए बाध्य करेगा। तो पहले हम मानते थे कि एक मर्यादित स्कोप है वेटरनरियंस का, अब ऐसा नहीं है। हम लोगों को बड़ा ही सोचना चाहिए। हम सोचेंगे और करने लगेंगे तो बाकी बातें अपने आप आएगी। पहले ये कॉलेज था, यूनिवर्सिटी हो गई। कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं थी वेटरनरियंस की, है ना? थी लेकिन बहुत मर्यादित थी, वो आज भारत व्यापी हो गई। कई बातें, बजट बढ़ गया, आदि आदि हो रही है। वैसे ही एक अलग वेटरनरी काउंसिल वो भी होगा, वो होना चाहिए, ये अनिवार्य है। इस मत का मैं हूं, क्योंकि जिसका बंदर वही नचाए। तो पशुओं के बारे में विचार करना है तो पशु चिकित्सक ही चाहिए, पशु शास्त्रज्ञ ही चाहिए। उसका सहयोग सब तरफ हो सकता है, लेकिन पशुओं का स्पेसिफिक विचार करना है तो उसमें जिनकी जानकारी है उनके हाथ में बागडोर चाहिए। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र में कुछ करना है तो खिलाड़ी लोग सोचे, दे नो द रोप्स। और इसलिए ऐसा काउंसिल होना चाहिए। इसके बारे में मेरा मत पूर्ण अनुकूल है। केवल मैं पशु चिकित्सक हूं इसलिए नहीं, मैं देख रहा हूं कि जहां जो जानकार है उनके हाथ में है, वहां वो क्षेत्र आगे बढ़ता है। तो ये सारी बातें आएगी, आना अनिवार्य है, समय की वो मांग है। लेकिन ये आना सबको अनिवार्य लगे ऐसा कर्तृत्व हमको दिखाना है और हम दिखा रहे हैं। मैं केवल याद करा रहा हूं, कोई कमी नहीं बता रहा हूं। केवल मेरी प्रार्थना इतनी है कि अब वेटरनरियंस ने अपनी भूमिका के बारे में एक बड़ा पिक्चर मन में रखना चाहिए। हम केवल जानवरों की ट्रीटमेंट करते नहीं, केवल जानवरों को जानते नहीं। मैं 50 साल से क्षेत्र से बाहर हूं, मेरा कंट्रीब्यूशन वैसे कुछ नहीं है।
बस एक है, वो हो गया है, मैंने किया नहीं है। बहुत लोग सोचने लगे कि जानवरों का डॉक्टर मनुष्यों में भी काम कर सकता है। तो अब समाज की भी सोच धीरे धीरे बदलेगी। हमको सोचना चाहिए कि हम केवल पशु वैद्य नहीं है, हम इस देश के आर्थिक प्रगति के एक बड़े आधार है। कृषि प्रधान देश की कृषि फायदे में तब तक थी जब तक अनेक प्रकार की फसल, पशुपालन, मछली पालन सहित किसान खेती करता था। और फिर से लाने की आवश्यकता पड़ेगी। आज के किसानों की स्थिति में ये कैसे लाना, इसका विचार करना पड़ेगा। और पशुपालन उसका एक अविभाज्य अंग होने के नाते हमको भी सोचना पड़ेगा। तो हम केवल जानवरों की चिकित्सा करने वाले लोग नहीं है, देश की प्रगति में हाथ लगाने वाले हैं। और केवल उतने नहीं है, क्योंकि हम भारत के पशु चिकित्सक हैं। तो दुनिया में जो 4 बड़ी समस्याएं हैं उसमें एक है पर्यावरण। तो पर्यावरण के ये जो सारे घटक है, उनके साथ कैसे रहने से पर्यावरण की समस्याएं समाप्त हो सकती है और मनुष्य जीवन पशु पक्षियों के, वनस्पतियों के जीवन के साथ साथ आगे बढ़ सकता है, इसका भारतीय रास्ता देने का दायित्व हमारा है। हमारा जो टास्क है, हमारा जो जॉब है, वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। उसको करते समय आपके मन में ये भावना रहे और उस लगन से और गंभीरता से आप करें जैसे कर रहे हैं, वैसा ही आगे चलता रहे। तो जो कुछ अपेक्षाएं आज यह व्यक्त हो गई वो सारी पूरी होने ही वाली है। मैं कह रहा हूं कि मैं उसका समर्थन करता हूं तो मेरे समर्थन से कुछ होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो अनिवार्य आवश्यकता है, तो वो आने ही वाली है। इसलिए आने ही वाले बात को हाथ लगाने का काम हमारे जैसे लोग करते हैं। वो होता है तो समय की आवश्यकता के अनुसार, समय को पहचान कर हम अपने इस भूमिका का बड़ा विचार करें। और इस दृष्टि से आज की ये जो परिषद है, वो परिषद बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आप लोगों के कर्तृत्व से यहाँ जो हो रहा है देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि कल ये कहा जाएगा कि सारे पर्यावरण की समस्या से मानवता को निजात देने का प्रारंभ, जैसे गंगा का प्रारंभ गंगोत्री से हुआ छोटी सी धारा के रूप में, वैसे नागपुर की वेटरनरी यूनिवर्सिटी में हो गए एक कॉन्फ्रेंस के कारण ये चल पड़ी बात और आज सफल हो गई है। ऐसा आगे बहुत 100 वर्षों के बाद नहीं, 25-30 साल के बाद ऐसा कहा जाए, इतना कर्तृत्व आप प्रकट कर रहे हैं। उस कर्तृत्व पर भरोसा रख के मैं ये कहता हूं कि इस बड़े भूमिका का विचार करके आप अपना काम करें। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं और मेरे 4 शब्दों को विराम देता हूं। आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी इस गरिमामय अवसर पर अपनी उपस्थिति एवं विचार उत्तेजक और प्रेरक संबोधन के लिए हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। It's now time to express our gratitude to all those who have contributed to the success of the program. I invite Organizing Secretary Dr. Upadhyay Sir, DI and Dean, Faculty of Veterinary Science, MAFSU, Nagpur, to kindly propose the vote of thanks. As the Organizing Secretary, I warmly welcome all the distinguished guests, delegates and students, and I am here to offer vote of thanks for all-round support I received during organization of this national convention organized by ISACP, MAFSU and NAVAR. I am greatly indebted to our distinguished alumnus, Honorable Chief Guest Mohanji Bhagwat, Sarsangh Chalak, Rashtriya Swayamsevak Sangh, who in spite of his busy and hectic schedule has agreed to come over here and bless us all. Mohanji, you are a role model for all of us and we will be always blessed by you. I am thankful to young, dashing, dynamic Honorable Parinay Fukeji, Member of Legislative Council, who has been recently inducted into our Executive Council and who is going to be our strength in getting all kind of support from the government of Maharashtra and Maharashtra state all, and even from the center.
I take this opportunity to thank Honorable Ramaswamy sir, IAS Secretary of our department, who has helped the university generously in getting funds for the university infrastructure development. I would like to quote that last year the budget of the university was just 32 crores and in this year we have 142 crores, and Ramaswamy sir has agreed that if we could spend this nicely, we could get much more. Thank you very much, sir. I am also thankful to Honorable Umesh Chandra Sharma ji, the President of Veterinary Council of India and President of Indian Veterinary Association, who has his function at Tirupati today, but with our request, he is kind enough to be here amongst us and blessing us. He is always present whenever we are calling. Thank you very much, Umesh Chandra Sharma ji. Thanks are due to Dr. Prathaban, President of Indian Society for Advancement of Canine Practice and General Secretary, Dr. Srivastava, who permitted us to conduct this convention at Nagpur with very short notice. I am indebted to Dr. Nitin Patil sir, our Honorable Vice Chancellor, for remaining strongly behind us and allowing a free hand to me and my team in organization of this event. Thank you very much, sir. I also thank Honorable Sudhir Diveji, our Executive Council member, a great visionary and who has been guiding the university and helping the university in all aspects. I am indebted to Dr. S.B. Barbudhe, the President of NAVAR, and Dr. Ajay Poharkar, Secretary of NAVAR, for agreeing to host this conference jointly. I express my gratitude towards Honorable Commissioner of Animal Husbandry, Dr. Devre, who deputed Livestock Development. Okay, the President of Maharashtra State Veterinary Council, Dr. Ajay Poharkar, the Registrar of MSVC, Dr. Pundlik Madam. I also thank my colleagues in the university, Dr. Kurkure, the Director Research, Dr. Bonde, the Director Extension Education, Dr. Ramteke, Dean Law Education, Dr. J.P. Korde, the Associate Dean, and I also thank the Registrar, Ms. Mona Thakur Madam, and our Comptroller, Manisha Shende Madam, and University Engineer, of course, Sheikh Sir. Thanks are due also to Pet Practitioners Association of Vidarbha, Senior Veterinarian Foundation, and all those who have directly or indirectly supported us. I am also taking this opportunity to thank my organizing team for their untiring efforts throughout these days, because the time period was very short. I also thank Honorable former Vice Chancellor Dr. Dakshinkar sir to be here, who has accepted our invitation to give a theme paper on this. Similarly, I thank and welcome Balachandran sir also. Finally, I thank and welcome the distinguished all guest lead paper presenters, retired faculty, veterinary professionals, academicians, delegates, press media, and all sponsors for making this event successful. Thank you very much. Thank you to you also, Upadhyay sir. I request all to stand in reverence for the Maharashtra State Anthem, followed by National Anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय महाराष्ट्र जय हिंद. With the permission of the dignitaries, I now declare the inaugural function as formally concluded. A couple of announcements. Kindly visit the stalls of our sponsors in your free time. First and second